Okay. So next slide is here. So these are the different types of organolithium reagent can be used into the organic synthesis by using it prepare by using a different methylation process. Okay. So this is for your kind information. Okay, this all reagent we are not going to be discussing in this lecture, but it is this slide is only for your kind information. This type of organolithium compound will be these are the present in the organic chemistry. Okay, then let me see about the reaction, means how it react. Okay, similarly, as we know that the reaction of organomagnesium Grignard reagent, there is the R and Mg. So similar to the R and Li, the metal is some change. There is a lithium. So in RLi, this R having a negative charge because of more electronegativity as compared to the lithium, because lithium is a metal. So there is a negative charge on the R. Okay, and this R react with carbonyl group. So it attack on the electrophilic center because this carbon center is electrophilic in nature. Then the double bond is open up on the oxygen. So as we know the mechanism of that, so this R is attack on this carbonyl center. So we can see here this R bind with this carbon and this double bond is break down into the single bond. Okay, means we are seeing there is an intermediate structure is formed. Here this is the R. Okay, and one this is the carbon. Then there is the oxygen having a negative charge, and on the second side there is the R from the this organolithium and one of the hydrogen of this aldehyde group. Okay, so this structure, intermediate structure like this, and then if you carried out acidic workup is there, means if you acidic hydrolysis is carried out there, so this O negative take this positive charge, it's positive, and it convert into the hydroxy group, means it convert into the alcohol. Okay, so we can see here this is the aldehyde other than the formaldehyde. So we can see here it gives secondary alcohol. It gives secondary alcohol. As we know that when the organolithium is react with the formaldehyde, so it gives primary alcohol. In case of formaldehyde, it gives primary alcohol. In case of other than formaldehyde, you know, like acetaldehyde, means if you consider there is one R, okay, and this R may be the different type of alkyl and aryl type of group. Okay, so this is the aldehyde, means other than the formaldehyde, so it gives secondary alcohol. Always it gives the secondary alcohol. Okay, but if there is a formaldehyde, it gives the primary alcohol. Okay, so this is the another example for that, and we use here ethyl lithium. Ethyl lithium is an organolithium compound, and the CH2 group of the ethyl having a negative charge, and this negative charge carbon attack on this carbonyl center, and then the double bond is open up, and after the acid work out, it convert into the alcohol, and we can see here this type of secondary alcohol is formed. Okay, then the mechanism we can see here. Okay, this is the aldehyde, this aldehyde group, and this ethyl, this is the CH2 negative. The CH2 negative we can see in the blue color here. This negative goes on this carbonyl carbon double bond. This double bond is open up on the oxygen. So we can see this structure is found. Okay, and after the acid workout, what happened? Acid workout, this negative oxygen abstract this proton from this, and it convert into the alcohol molecule. So finally we can see here there is an alcohol molecule formed, but this is the secondary alcohol. This is the secondary alcohol because our substrate is other than formaldehyde. Other than formaldehyde, so it gives the secondary alcohol. If you use the formaldehyde, it gives the primary alcohol. Okay, as we see into the then some example reaction with the CO2. Okay, then there is a carbonyl group, C double bond O, CO2 is there. Okay, let me see this type of structure of the CO2. This is the organolithium, means this carbon having a negative charge. This negative charge carbon attack on this carbon. So one of the double bond is open up on this oxygen, and finally it convert into the, here we can see
this attack on, and then it gives such a type of structure. Okay, then again MEI is react with this, so we can obtain such a dianionic structure, this type of structure. Okay, and after the hydrolysis, what happened? After hydrolysis, there is a formation of hydroxy group on the both oxygen atom. Means here hydroxy group, and on this oxygen also hydroxy group. Two hydroxy group present on the same carbon, so it gives this type of okay. So this is the ketone molecule is there. Okay, and if there is a further reaction is occurring in between two organolithium, so it again reduce into the alcohol. Okay, so this type of reaction with the CO2. Then, but in case of the organomagnesium, it convert into the acid. Then reaction with this cyano. Okay, cyano group hai. There is a alkyl group and there is a cyano. Okay, so let's see here. C triple bond N is the electrophilic carbon. C triple bond N, this carbon is electrophilic carbon, and this R Li, again this R is a negative charge, is a nucleophile, so it attack on this carbon. See the triple bond open up, one of the pi bond is open upon the nitrogen, so we get this type of imine structure. And after the hydrolysis, we can see this convert into this structure, and again hydrolysis means 2-time hydrolysis we get, this is the carbonyl compound. Okay, after the 2-time hydrolysis we get the carbonyl compound. Okay, so this is the reaction with the alkyl cyanide group. Then their mechanism we can see here. In the first step, what happened? This ethyl lithium is the organolithium compound we use for the reaction. So this ethyl group means there is a CH2 and CH3, Okay, so there is a negative charge, okay, on this carbon, and there is a, this is the CH2, and here CH3. So this is the organolithium, and this is the a nucleophilic part. Okay, and this nucleophile attack on this electrophilic carbon. So we can see here, then this one of the bond is open for nitrogen, we get this imine structure, this like that. Okay, then it is hydrolyzed, and due to the hydrolysis, this negative charge on the nitrogen abstract this proton from this acid, and it convert into the imine. Okay, and then again with 2-time abstract, and this carbon is the electrophilic in center. So after the abstraction of one of the hydrogen, there is the H2O molecule, and H2O molecule oxygen having a lone pair of electrons. So there is a nucleophilic attack by this hydroxy group, and this structure, this imine structure, it finally convert into this carbonyl structure. Okay, this convert into the carbonyl structure, because as we know that we already discussed into the imine reactions, there is a protection of carbonyl group is occur by the imine formation, and then after the hydrolysis it convert into the carbonyl compound, means it is deprotection is occur. Okay, so this type of protection and deprotection can be carried out for the carbonyl compound. So we can be hydrolyze this imine, and finally it convert into the carbonyl compound. Okay, so these all are the steps occur in between to this conversion, so we have to be understand here. Okay, so this is the reaction with alkyl cyanide group. Okay, so let me see some example is here for the organolithium. So this is very sterically hindered structure we can see here. This is the very sterical hinder. Okay, so if you this react with the organolithium, so organolithium is attack on this carbonyl center because of smaller and smaller size as compared to the magnesium. So it gives this type of tertiary alcohol, because the reaction is occurring between to the ketone. Okay, this is the ketone, and react with the organolithium. So it convert into the tertiary alcohol after the hydrolysis. Okay, then reaction with acid. Okay, reaction with acid. So let's see here. This is the 3-time organolithium we use, because the first one molecule is abstract this hydrogen and form this type of structure.
Then second molecule bind with this oxygen. Okay, this Me attack on this carbonyl center. Second molecule attack on this carbonyl center. Okay, and then oxygen is open up. So the second lithium is form bond with this oxygen, means it's structure like this. Okay, so this is the tetrahedral intermediate structure, and then acid hydrolysis is there. So this OLI bond, OLI is converted into the hydroxy molecule. So we can see here this type of hydroxy group is there. Okay, okay, and again there are two hydroxy group, means two hydroxy group on the same carbon. It is an unstable structure, so there is a loss of H2 molecule and it converted into the carbonyl compound. So we can see this is the ketone molecule is formed due to the attack on the acid. Okay, so this is a summarized form of the reaction of organic lithium. So let me see. When this RLI is react with the epoxide, so it gives a primary alcohol. We can see here, because this carbon and this carbon are electrophilic in nature, and there is no problem to attack, no selectivity for the attack by the RLI. So R goes to any one carbon from this two, and it gives this type of primary alcohol. Okay, this is the reaction with the H2. As we know that when the protic solvent and protic molecule is react with the metallic compound, so it is destroyed here, because protonation is occur, and this R is abstract the proton and it convert into the alkane molecule. Okay, so this is one of the reaction with H2 molecule. When reaction with the formaldehyde, so it gives the primary alcohol. We can see here, this is the primary alcohol. When reaction with the other than formaldehyde, so it gives the secondary alcohol. So this is the secondary alcohol is here. Okay. When reaction with ketone, so we can see here this is the tertiary alcohol. Okay. Reaction with ester, so we can see here there is a ketone molecule is there. There is a ketone molecule. Okay. Reaction with nitrile, so we can see this is the ketone molecule is obtained. Okay. After the hydrolysis. Okay, then reaction with CO2. So we can see here after the hydrolysis, we can see here there is a ketone molecule is obtained. This is the ketone. Okay, so these are the different reaction carried out by organolithium. ठीक है, तो ऑर्गेनोलिथियम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्थोमेटलेशन यूजिंग अ रेन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड. तो ऑर्थोमेटलेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं. ठीक है, ये भी ऑर्गेनोलिथियम की ही रिएक्शन है, बट इसमें जो है ऑर्गेनोलिथियम ये एरोमेटिक ऑर्गेनोलिथियम को यूज करते हैं और उसमें ऑर्थोमेटलेशन होता है. ऑर्थोमेटलेशन मतलब यहाँ पे हम समझेंगे इस एग्जांपल को लेके. यहाँ पे ये जो है ना एरोमेटिक रिंग है जिसे हम अरीन कहते हैं. ठीक है, और इस अरीन के पोजीशन पे होती है जैसे ना ऑर्थो मेटा प्यारा. ठीक है ना, इस तरह से समझो. यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साथ जो है बाद में यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और इधर उसको सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ. ठीक है, उसके बाद इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन मतलब ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पे. अब ये जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे होता है ऑर्गेनोलिथियम जो है वो यहाँ पे बन जाता है ना. यहाँ पे कार्बन है और यहाँ का कार्बन है, दोनों भी ऑर्थो है. तो समझो यहाँ पे जो है ऑर्गेनोलिथियम बन जाता है तो यहाँ पे आएगा लिथियम. ठीक है, इस तरह से. तो ये जो लिथियम है और ये ऑर्थो पोजीशन का ये जो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है ये जो है इसके इंटरेक्शन में होती है ना, इस तरह से. तो ये इंटरेक्शन जो है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है ना, इसे कहते हैं ऑर्थोमेटलेशन. ठीक है, ऑर्थोमेटलेशन. तो ये जो है ये कंसेप्ट हमें समझना है, इसको यूज करके हमें रिएक्शन करनी है. ठीक है, तो देखो किस तरह से होती है. तो यहाँ पे एक स्टेरिकल फैक्टर भी आता है. अभी यहाँ पे स्टेरिकल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस साइड में भी अल्किल इथिल ग्रुप है, तो इसका स्टेरिकल हिंड्रेंस इस साइड में होने की वजह से ये जो है
ये THF के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये जो है इस साइड में, मतलब लेस स्टेरिकल साइड में इसको क्या होता है, यहाँ पे लिथियम बनता है, ऑर्गेनोलिथियम इस साइड में बन जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनोलिथियम इस साइड में बना, तो ये लिथियम जो है, दिस लिथियम इज क्लोज टू दिस ऑक्सीजन। Okay, so there is a lone pair of electron of oxygen and this lithium in the interaction. Okay, so this provides the stability to this structure. Okay, so this concept is known as the orthometallation concept. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये ऑर्गेनोलिथियम इस साइड में बना, तो ये जो है कार्बन यहाँ से एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है तो इस साइड से होगा, इस साइड से यहाँ पे अटैक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो, ये अगर वहां पे होता है रिएजेंट जिसे कहते हैं पेंटामिथिल डाइथिल डाइथिलीन टेट्राअमाइन, सॉरी ट्राइअमाइन, तो ये जो रिएजेंट है ये वाला हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला रिएजेंट, मतलब ये वाला अगर यहाँ पे यूज होता है तो ये जो है, ये यहाँ पे इस साइड का जो है ना, इस साइड का यहाँ पे सॉरी, ये जो दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देगा। ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लिथियम अटैच होगा और इस लिथियम के साथ में इसका क्या होता है, इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है लिथियम के साथ में। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है, ये पूरा कंसेप्ट जो ऑर्थो इंटरेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है विद द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, so this interaction is also known as the orthometallation concept. Okay, and this organolithium let's going to be react with a different type of electrophile. Let me see. Okay, if there is a this, ये जो ग्रुप होता है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये वाला ग्रुप, तो इस ग्रुप को डायरेक्ट मेटलेशन ग्रुप भी हम कहते हैं, जैसे DMG, डायरेक्ट मेटलेशन ग्रुप, डायरेक्ट टू मेटलेशन ग्रुप, है ना, मतलब ये मेटलेशन के लिए क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट मेटलेशन ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर इस तरह का DMG होता है, डायरेक्ट टू मेथिलेशन ग्रुप, जो इस तरह से होता है ऐसे, मतलब जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हमें देखने को मिलता है, इस तरह से ग्रुप हमें देखने को मिलता है, तो ये स्ट्रांगली वहां पे ऑर्थोमेटलेशन इफेक्ट जो है ये शो करते हैं, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वजह से वहां पे जो है ये स्ट्रांगली इंटरेक्शन रह सकता है, so that's why it is shows the strong orthometallation effect. Okay, then moderation में जो है, जहाँ पे हम अल्किल ग्रुप देखेंगे, है ना, हैलोजन ग्रुप देखेंगे इस तरह से, तो इस तरह से अगर ग्रुप होते हैं तो वहाँ पे मॉडरेट मेटलेशन हो सकता है, मतलब थोड़ा जो है वीकली इंटरेक्शन हो सकता है, और अगर इस तरह से होता है सिर्फ अल्किल ही ग्रुप वहाँ पे देखने को मिले तो वीकली इंटरेक्शन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन योर माइंड। ओके, लेट दिस इज द DMG। ओके, ये DMG होता है, DMG डायरेक्ट टू मेटलेशन ग्रुप। ओके, और M जो होता है, M इज द लिथियम। ठीक है ना, जो कि हम ऑर्गेनोलिथियम को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें ये देखो इस तरह से कंडीशन होती है ना, ये वाली DMG यहाँ पे, तो ये इंटरेक्शन अच्छे तरह से होता है। इस तरह से भी अगर पोजीशन होती है तो भी वहां पे ऑर्थोमेटलेशन हो सकता है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होती है तभी वहां पे भी हमें ऑर्थोमेटलेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऑर्थो नहीं होगा बट मेटलेशन जो है, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब और ऑक्सीजन वाला या मिथिल ग्रुप में जो भी है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन अगर होता है, ठीक है, तो उसमें मेटलेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से, ये तो ऑर्थो पोजिशन का है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। इस तरह से ये भी अगर ऑर्थो पोजीशन होता है, यहाँ पे सेंटर में दिखा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकता है क्रोमियम के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंसेप्ट ऑर्थोमेटलेशन हमें समझना है। DMG जो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह से ऑर्थोमेटलेशन वहां पे हमें देखने को मिलेगा। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑर्थोमेटलेशन कैसे हो सकता है इसमें। ठीक है, देखो अब ये वाला रिएक्टेंट है, यहाँ पे
ये पूरा जो ग्रुप हमें दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये पूरा ग्रुप जो है ये है डीएमजी, ठीक है ना, ये डीएमजी है। और यहाँ पे ये जो है ऑर्थो वाला हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा लिथियम, ये अल्किल ग्रुप है ना, एन ब्यूटिल है ना, तो ये ब्यूटिल जो है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये जो है एज अ बेस करके एक्ट हुआ, यहाँ से ये प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो जो लिथियम है, लिथियम गोज टू दिस ऑर्थो पोजीशन एंड इट गिव्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है यहाँ पे। और ये जो लिथियम है, नाउ यू कैन सी हियर there is a nitrogen on this side and nitrogen having a lone pair of electron, we know that. So this lone pair of electron in the interaction with this lithium, okay, and this interaction is here, okay, so this is the orthometalation condition. And then it reacts with the methyl iodide as the electrophile. So this bonded electron is goes to this methyl and iodine is bond with the lithium, means minus Li, and we get this product, means methyl substitution is occur here and we can see this is the product, okay, इस तरह से होता है मेटलेशन, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, देखो ये वाला एग्जांपल है। अब इसमें यहाँ पे जो है ये वाला प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे लिथियम चला जाएगा, ठीक है। और हमें जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ का भी ये जो है ये भी इससे ज्यादा एसिडिक ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वाला भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ये वाला भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमें यहाँ पे एन ब्यूटिल 2 टाइम में जब यूज करेंगे तो हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। बट फाइनली जो रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं वहां पे ऑर्गेनोलिथियम जो बनेगा यहाँ पे, मतलब ये जो अरीन ग्रुप है, अरीन ग्रुप के साथ में बना हुआ ये वाली पोजीशन, यहाँ पे हमें जो है वहां पे मिथिलेशन यहाँ पे देखने को मिला, मतलब रिएक्शन विद मिथिल आयोडाइड। तो ये जो मिथिल आयोडाइड के साथ में जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ से जो मिथिल ग्रुप जो है इसके साथ में रिएक्शन होगी, ठीक है, मिथिल, और ये आयोडाइड जो है बाहर निकल जाएगा, लिथियम के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से गया तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये मिथिल ग्रुप जो है यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट है तो हमें इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऑर्थोमेटिलेशन से पूरी रिएक्शन हो रही है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें कि किस तरह से होता है, ठीक है ना। बाकी की रिएक्शन जो भी है ये सिमिलर टू द ऑर्गेनोलिथियम ही है ना, सिर्फ यहाँ पे इस तरह का जो डीएमजी ग्रुप होने की वजह से इसको स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तो उस तरह से ये सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है वहां पे, तो ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है मिथिल ऑर्थोमेटिलेशन की वजह से, मेटालेशन की वजह से। तो ऑर्थो मेटालेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है ये डीएमजी, वो तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो लिथियम सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे ये वाले कार्बन पे जो है हमें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब O2 के साथ में रिएक्शन होती है यहाँ पे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप वहां पे जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका हैलोजिनेशन होता है तो ब्रोमीन चला जाएगा, मिथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो मिथिल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते हुए दिखाई देता है। यहाँ पे अगर ईस्टर के साथ में रिएक्शन करते हैं